Okay, students. So today's topic is paragraph formatting. Okay. So first of all, text alignment in Word. Word gives you the facility to align the text of a document. Alignment in a document determines the appearance and orientation of text to edges of a paragraph. Now, alignment means जैसे कि अगर आपने कुछ लिखा है, so where you want to place that text, either on left side, right side, in center or justify. So we are having basically 3 to 4 type of alignments. Okay, so here are some alignments: left, right, center or justify. To align the text, first of all you have to select the text, then go into home tab, and then we have to select. So these 4 lines you will be able to see: center, left, right or justify. So in this way we can do the alignment. Okay, and we can also, there are some shortcut keys available, so always remember shortcut key for each and everything. That will be very useful for speed up. Okay, so if you want to align your text, just press Ctrl L. लेफ्ट के लिए राइट एल, कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, एंड सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, देन जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे. Okay, so these are shortcuts available. Now next, with the help of practical, we will see how we can do this thing. So we will open our application, that is WORD you have to write, and first application you have to open. Clear? So this is the application we are going to work upon. So always select blank document. Okay, now if we are writing something like hello learning text alignment. Okay, so if you want to increase the size, how you can do that? Just select your text, come here and increase the size. Okay, so you can increase size according to your choice. So if you are keeping it 48, no, we will keep it 36 only. Okay, and you can also change the font style. How you can do that? Just select the text and from here font group click on bold. So all these things we have already practiced in our last classes. Okay, so today topic is alignment or paragraph formatting. So हमने क्या किया? We have written a text. Now we want to align this text. So how you can do that? This is your home tab. Okay, and in home tab, in paragraph formatting, in this here, so this is the option for left, this is the option for center, this is the option for right, and this is for justify. Okay, so in this way you can. Priyansha is saying, ma'am, your voice is not coming. Students, please show me thumbs up if there is no voice issue, and show me thumbs down if you are having voice issue. Priyanshi, please check settings from your side, beta, because everyone is showing thumbs up. Okay, so please check sound connection from your side. Okay, so अगर हम इसमें only one word लिखते हैं, then it will be easy to understand. Okay, so suppose I have written this text. Now what we have to do? We have to write in capital letters. So we will go here and write sentence or capitalize each word. This thing we have also practiced. Now we want to do alignment. So if I am selecting here, see, this is your center alignment. तो by default आपका text किस में आ गया? Center में. This is your left alignment. So by default किस में आ गया? Left में. This is your right alignment. Right में किया तो पेज के right पे आ गया. और justify करोगे, it will align at justify position. Okay, so in this way you can do the text alignment. Next topic we are having So next we are having creating bullet and numbered list. Now what is the meaning of bullet and number list? Suppose you are writing
Like I am having different kinds of pen in my stationery box. Okay, and I am asking, tell me the colors name. So you will write number 1 red, number 2 green, number 3 white. So in this way you are going to write some वैल्यूज ओके अगर आपको किसी भी वैल्यूज के आगे कुछ नंबर्स पुट करने हैं या कुछ पॉइंट्स पुट करने हैं नंबर पुट करोगे तो उन्हें बोलेंगे नंबर लिस्ट या फिर कोई अगर आप डॉट लगाओगे एरो लगाओगे इस तरह के कुछ निशान लगाओगे that is called bullet list. Okay, so if you want to do that, how we can do this? So we will come here. So start writing here like my, first of all we will just reduce the size. Okay, my hobbies are, okay, आपने ऐसा लिखा कि my hobbies are, then press enter and you will write playing and then you write playing में आपने क्या लिखा कि आपको playing में भी कुछ और सीखना है तो playing में आपके पास क्या क्या है like to play indoor games. Okay, so we will write indoor games and in indoor games what you like to play? I like to play Ludo or Carom, etc. Okay, in this way you can write. So next अगर हम playing में लिखें तो आप next लिखोगे कि okay if we will take something else that will be fine. Okay, so if we are writing hobbies, so we will write here reading books. Next hobby we are writing playing football. Okay, next we will write computers पे आपको काम करना पसंद है. So in this way you can write many things. Now you want to put some number in front of these hobbies. How you can do that? Just select the complete hobbies you have written. Okay, come here in this way. So this is for bullet. तो यहाँ पे देखो different options आएंगे कि आपको डॉट लगाना है तो देखो इन सब के आगे डॉट आ जाएगा आपको सर्कल लगाना है तो सर्कल आ जाएगा अगर आपको इस तरह से स्क्वायर पुट करना है तो स्क्वायर आ जाएगा मीन्स जो भी आप चूज करोगे ना आइकन बुलेट वो आपका इन हॉबीज के आगे प्लेस हो जाएगा सी इन दिस वे यू कैन पुट बुलेट और नंबर्स इन योर वर्ड फाइल कुछ भी आप चूज कर सकते हो एरो लगाना है टिक मार्क लगाना है या फिर और आप और भी कुछ ले सकते हो टोटली डिपेंड अपॉन यू बट इफ यू वांट टू पुट सम नंबर्स okay 1 2 3 a b c d so all those things we can do also see 1 2 3 okay और अगर आपको कुछ ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आपको रोमन में लिखना है तो रोमन में भी लिख सकते हो ओके सो दिस इज कॉल्ड numbering and bullet list. Is this clear to everyone? Show me thumbs up. If everything is clear to all of you, show me thumbs up everyone. Students, any doubts? Show me thumbs down. Everything clear? Show me thumbs up. Okay, Vinay is having doubt. Yes, Vinay, tell me beta. Clear your doubt, unmute yourself. Rishabh, clear your doubt. Vanshika. Yes, tell me your doubt, please. Okay, so in this way we can create list of number. Okay, so next we are going to do इंडेंटेशन पैराग्राफ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन मीन्स आपने अपनी लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना है कितना स्पेस आपको छोड़ना है बच्चे दिस इज द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 इंडेंटेशन पैराग्राफ ओके so word allows you to change the indentation of a paragraph
It is the distance of a paragraph from either the left margin or the right margin. With the margin, it is possible to increase or decrease the indentation. Means आप कितना space छोड़ना चाहते हो in your paragraph. So this is the meaning of indentation. Okay, so we are having different kind of indentation. Left indentation, right indentation. अगर आप left indentation करोगे means left से इस साइड से आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो, राइट करोगे तो यहाँ से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो अपने पेज के अंदर. सो दिस इज कॉल्ड इंटेंडेशन. एंड हाउ वी कैन डू दैट, जस्ट सी. So these are some steps given. First of all, we have to write something in our word. Any text you can write, okay? Then place the cursor anywhere in the paragraph you want to indent. Means आपको जिस लाइन के आगे स्पेस छोड़ना है, कर्सर को वहां पे लेके आओगे. ओके, वहां पे कर्सर प्लेस करने के बाद what you have to do, on the home tab paragraph group, click the paragraph dialog box. The paragraph dialog box will be appear on the indents and spacing tab. Under indentation, choose the value for left indentation. So for right indentation, steps will be same. Only you have to select right indentation. Students, open your chapter number 2 and open the page indentation paragraphs. Okay. Now, with the help of practical, we will see how we can do this. I am going to rub everything. Okay. So, suppose we are writing here, my name is Aditya. I am in grade 4th. Okay, and next we are writing I am in grade 4th, and then we are writing I love to play cricket. Okay, and my younger brother name is Aman. ओके, सपोज आपने ऐसे कोई लाइन लिखी या कुछ भी लिखा, ठीक है, एंड आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, सो सपोज आपने कुछ लाइंस लिखी, मीन्स कोई पैराग्राफ लिखा. नाउ यू वांट टू डू द इंटेंडेशन. इंटेंडेशन मीन्स आप कुछ स्पेस छोड़ना चाहते हो, तो सपोज आपको यहाँ से कोई स्पेस छोड़ना है. सो हाउ यू कैन डू दैट? सो जस्ट कम हियर एंड फ्रॉम दिस वे वी कैन डू द इंटेंडेशन. ओके, सी, सो दीज आर सम इंटेंड ऑप्शन. सो जनरल आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई होता है. सो यू कैन डू द लेफ्ट इंटेंडेशन, right indentation, or justify. So if you will go with the left, it will do the left indentation. Okay, so if you will go with the right, next left, the next right, so in this way we can do the indentation depending upon your choice. Okay, so next topic we are having. Now one more thing you have to remember, you can indent the first line of a paragraph by placing the cursor at the beginning of a paragraph and then pressing tab key. Means आप just उसको कर्सर लेके आओगे और कीबोर्ड पे आपके टैब की होती है, TAB टैब की, कैप्स लॉक के ऊपर. अगर आप वो भी प्रेस करोगे then only you will be able to put some space in front of first line. Harshit Jahangir, page number I don't know because I am not having book in my hands. What you have to do, open your chapter number 2 and topic number you have to open paragraph formatting. Okay, open your chapter number 2. Pratishtha, tell me the page number, beta.
Write page number in chat box, Pratishtha. Harshit, you are having book in your hands, right? Write the page number fast. So in this way, we can do the indentation. Okay. So next we are having line and paragraph spacing. You can increase line and paragraph spacing to make the document easier to read. Line spacing is a vertical distance between two lines in a paragraph. By changing the line spacing, you can add extra spaces line to a paragraph to set a line. See, अगर आपने कुछ lines लिखी, अगर उन line के बीच में कोई space नहीं होगा, then it will be very difficult to read. ओके और अगर हम हर लाइन के बाद कुछ स्पेस दे देंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू रीड योर पैराग्राफ, रीड योर कंटेंट, रीड योर document. So that's why if you want to put some space, then line and spacing is the mandatory option for that. Okay, so how you can put that line space and paragraph space? See how. So these are two lines we have written. Okay, so if you want to, by default there is a line spacing, but if you want to put some more space, how you can do? You have to come here. See, by default it's 1.0. If you will go 1.15, some more space will be there. If 1.5, more space will be there. 2.0, more space will be there. So in this way, if you want to put some space in between of two lines, so with the help of line spacing, we can do that. Is it clear to everyone? Okay, very good. So next we are having what paragraph spacing is the vertical distance between two adjacent paragraph. Means line spacing तो क्या होगा कि ये दो आपने पैराग्राफ लिखे इनके बीच में, इन दो लाइंस के बीच में. बट सपोज आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, एक पैराग्राफ आपने लिखा ये, नेक्स्ट पैराग्राफ आपने लिखा, I want to become an engineer. Okay, because I love to do new experiment. Okay, so suppose we have written two paragraphs and one more thing we write, my elder brother is also an engineer, or you can say computer engineer. ओके तो आपने ये दो पैराग्राफ लिखे. इफ यू वांट टू पुट सम स्पेस, अभी इसमें कोई स्पेस नहीं है बट आपको इसमें कुछ स्पेस डालना है, तो हाउ यू कैन डू दैट? वी हैव टू सिलेक्ट दिस पैराग्राफ एंड फ्रॉम हियर add space before paragraph. So in this way we can add some space between this paragraph and this paragraph. Okay, तो ये दो different paragraph है and if you want to put some space between both this paragraph here, so we can do that from this option. Okay, clear? So next we are having page formatting. Now what is the meaning of page formatting? Page formatting means आपको पेज में कुछ डिजाइन ऐड करना है, जैसे कोई कलर, बैकग्राउंड, या पेज को आपको वर्टिकल रखना है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, horizontal रखना है, that is called landscape. So if you want to do formatting in your word page, then we are having this page formatting option. Okay,
So changing page orientation. Page orientation is the way in which a page is oriented to display. There are two page orientation available. It can be portrait or it can be landscape. Now, if you want to change the page orientation, how you can do that? Select the layout tab. In the page setup group, click orientation. A list with orientation option will appear. Click on portrait or landscape to desired page orientation. See, बहुत अगर आपको पेज लेआउट चेंज करना है, पेज साइज चेंज करना है, सो ऑल दोस थिंग, पेज का मार्जिन चेंज करना है, ये तीनों चीजें आप एक ही ऑप्शन से कर सकते हो. सी हाउ यू कैन डू दैट. सपोज आपका ये एक पेज है, ओके, देन फ्रॉम दिस लेआउट टैब, ठीक है, अभी तक हम सारा काम किस में कर रहे थे, होम टैब में, बट पेज फॉर्मेटिंग के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन लेआउट टैब. सी फर्स्ट वन इज मार्जिन. मार्जिन मीन्स आप इधर से, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से क्या स्पेस छोड़ना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिन. ओके, सो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल, नैरो करेंगे तो कुछ स्पेस और कम हो जाएगा, मॉडरेट करेंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा, वाइड करेंगे तो और वाइड हो जाएगा. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने पेज में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो. बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है. क्लियर. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मीन्स आप वर्टिकल अलाइन करना चाहते हो पेज को या फिर हॉरिजॉन्टल. सो इफ यू वांट टू Dhruv, what happened, beta? What you are writing in chat box? Okay, if you will portrait, then it will align. Portrait, landscape करोगे तो landscape आपका align हो जाएगा. ठीक है. Then there is a size, means आपको उसको letter format में लिखना है. different size आपके पास available है. जो भी आप size select करोगे, according to that आपका पेज का size set हो जाएगा. ठीक है. मोस्टली हम A4 रखते हैं अगर हमें कुछ प्रिंट आउट्स लेने होते हैं. नेक्स्ट, कॉलम्स. 1 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है. सो ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल हियर. देन वी आर हैविंग लाइन नंबर. आपको लाइन नंबर्स देनी है तो डायरेक्टली यू कैन गिव सम लाइन नंबर. देन नन तो नन, हाइपर, automatic. So all these things we can do. Okay. So all these options available in layout tab for page formatting. So this is the thing we have learned today. So next we are having, next topic we will cover tomorrow, or we can continue with the header or footer if we are having time. Okay, so we are having still some time, so we will continue with this header or footer. Students, you are not supposed to be send anything in your chat box. Otherwise, I will expel each and everyone from this class. Okay? So remind this thing, you are not allowed to write anything except your doubts. Okay? I will not allow you to join this live class again.